Good morning, everyone. Today I am here to teach you EVS chapter number 8, Means of Travel. In this chapter, we are going to learn about different types of vehicles and fuels used in vehicles. So let's start the chapter. So students, means of transport are very important in our life. If there were no means of transport, how would we go somewhere? Or how would we transfer the goods? When people move from one place to another, it is called traveling. एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उसको क्या बोलते हैं? Traveling. Things that help us to do so are called means of travel. So means of travel are very important in our life. So dear students, if I want to go from one place to another, how will I go? I can walk or I can run. But what will I do if I have to go very far? I can use bicycle or rickshaw. I can also use car, truck or scooter for a longer distance. I can also use train and bus if I want to go from one city to another city. So students, there are many types of vehicles. They move on land, water and air. For example, car, bus, truck, train, etc. All these vehicles are move on land, boat, sailboat, ship. These vehicles move on water and helicopter, aeroplane, rocket, etc. These are move on air. Okay. So students, how do we decide which vehicle we should take for traveling? हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा व्हीकल चूज़ करना चाहिए कहीं जाने के लिए? फर्स्ट थिंग इज द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड. सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितनी दूर तक जाना है. सपोज वी हैव टू गो स्कूल फ्रॉम आवर हाउस. हमने अपने घर से स्कूल तक जाना है. उसके लिए तो हम कार भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक, स्कूटर, स्कूटरी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हमने अपने घर से किसी दूसरी सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल बठिंडा जाना है, उसके लिए या तो हम ट्रेन पे जाएंगे या बस पे जाएंगे या अपनी कार पे जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग इज़ द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल. आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको व्हीकल चूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ द टाइम टेकन टू ट्रैवल. मीन्स आपने उस जगह पे कितने टाइम तक पहुंचना है. अगर तो आपके पास काफ़ी टाइम है तो फिर बठिंडा जाने के लिए आप साइकिल भी चूज़ कर सकते हो. पहुंच तो जाओगी, टाइम लगेगा. ओके. बट उसकी जगह अगर आपको जल्दी जाना है तो आप कार चूज़ कर लो, बस चूज़ कर लो. द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ ट्रैवल. मीन्स आपको कहीं जाने के लिए कितना खर्चा करना है. ओके. We use a scooter, motorcycle or car to travel short to long distance. We can also use a bicycle to cover short distance. A train can be used to travel to places that are far. And an aeroplane can also be used to travel to far off places. Means एरोप्लेन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर हमने अपनी कंट्री से किसी और कंट्री तक जाना है. ओके. नाउ differentiate slow moving vehicles
fast moving vehicles and very fast moving vehicles. So dear students, bicycle, rickshaw, battery rickshaw, auto rickshaw, boat, sailboat and bullock cart are the examples of slow moving vehicles. These vehicles move very slow. And the fast moving vehicles like car, bus, truck, train, motorcycle or scooter. These move fast as compared to bicycle, rickshaw. And the very fast aeroplane, helicopter, rocket and bullet train are some examples of very fast vehicles. These vehicles move very fast. They cover distance of kilometers in minutes. Next is vehicles need fuel. So dear students, as you know very well that all these vehicles need fuel for moving. इन सब vehicles को fuel चाहिए होता है move करने के लिए. Vehicles need fuel to move. And the fuels are coal, diesel and petrol are common fuels that are used in vehicles. There are some vehicles that they don't need fuel like cycle, rickshaw and bullock cart. They do not need any fuel. So these vehicles are very good because these vehicles do not pollute our air. Nowadays most of the vehicles run on CNG. CNG means compressed natural gas. Some fuels give off a lot of smoke. It causes a lot of harm to us. बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंदा धुआं निकालते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है. So students, CNG does not give off too much smoke. CNG उनके comparatively बहुत कम धुआं निकालता है. It helps to keep the air clean. Okay. So dear students, this is all about our chapter. I hope you got it very well. Thank you for watching this video.